Hello, assalamu alaikum, and welcome to another edition of GRC Previews. And we've been joined, making his debut on GRC is Azeem Siddiqui, the journalist and obviously the data specialist. So, Azeem, we welcome you on GRC. How are you doing? And of course, thank you for I'm being here. I'm great. I'm great. I hope you're doing well as well as Jab, and I hope we'll do a good show tonight today. Rather, जब भी जाता है Absolutely. मुझे नहीं पता, but I hope this will be fun. Oh, absolutely. It will be fun. And for people who don't Yeah. know, Azeem is also a data specialist. He's a journalist, but he's also a data specialist, and he will be covering the upcoming Sri Lanka series, जिसका हम preview करने वाले हैं इस episode में. और ये series cover करेंगे as a data specialist, as a statistician, Azeem, and we will take his point of view and his perspective on what he thinks is going to happen in this upcoming series, especially the first test with Pakistan versus Sri Lanka. So, first of all, Azeem, the first thing that we're going to start with is a very big question mark right now, which is the number 3 position in Pakistan squad. So, I have my views on it, obviously. I have some candidates for it. But first, obviously, I would like to know, who do you think basically fares well in that number 3 position right now? Okay, so since I had some idea कि शायद इस बारे में बात हो, because ये एक ऐसी पोजीशन है जो कि अब तक मतलब कंफर्म नहीं हो सकी since अजहर अली left. In fact, जब अजहर अली थे भी, तब भी उनकी पोजीशन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल था. और मतलब जो लोग डेटा पे काम करते हैं वो हमेशा आपको ये कहते हुए दिखेंगे, जिसमें मजहर ऑब्वियसली बहुत फेमस है. मजहर वाज अ वेरी बिग एडवोकेट ऑफ अजहर अली बिकॉज ही अंडरस्टूड कि अगर आप नंबर 3 पे बैटिंग करो तो नंबर 3 पे बैटिंग वुड नेवर बी इजी. So there is no number 3 in the world who is doing exceptionally well, barring one or two. मतलब आप एक दो को निकाल दो तो उनकी जगह कोई और नहीं है. तो पाकिस्तान के साथ भी यही इशू है कि जब आपने अजहर अली को रिटायर करवा दिया, वो रिटायर हो गए, whatever you want to call it, तो उसके बाद एक नंबर 3 पर एक आपके पास एक स्पेस आ गई है. और उसमें हमारे पास पिछली सीरीजों में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिसमें हमने बाबर आजम को खिलाया. अच्छा, बाबर आजम को जब हम खिलाते हैं नंबर 3 पे, तो हमारी जो मिडिल ऑर्डर है वो एकदम से वीक हो जाती है. उसके बाद फिर आपके पास एक थोड़ा सा ना गैप आ जाता है मिडिल ऑर्डर में, जो कि बहुत एक्सपीरियंस नहीं है. अगर आप सरफराज को खिलाते हो वहां पे, तो शायद एक्सपीरियंस जरूर हो, लेकिन सऊद शकील हो गए, सलमान अली आगा हो गए, मोहम्मद नवाज हो गए, कोई बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, जो कि आपको मिडिल ऑर्डर में चाहिए होंगे. तो बाबर का नंबर 4 पोजीशन इज प्रीटी मच सेटल्ड. अच्छा, इस पोजीशन को हमने कोप करने के लिए शान मसूद को खिलाया. तो पिछले तकरीबन अगर आप निकालें पिछले 2 सालों में, तो शान मसूद ने तकरीबन सिर्फ 7 दफा नंबर 3 पर बैटिंग करी है और उनकी सिर्फ 2 हाफ सेंचुरीज हैं. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊद शकील को हम लोग मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं नंबर 5 पे या नंबर 6 पे. तो उन्होंने पिछले 2 सालों में अच्छी खासी बैटिंग करी है नंबर 3 पे, जहां पर उनकी एवरेज है 55 की, तकरीबन मतलब 17-18 इनिंग्स में. उनकी 3 बड़ी सेंचुरीज हैं, जिसमें उन्होंने 187 बनाए थे, 181 बनाए थे, 158 बनाए थे. सो आई थिंक वो एक कैंडिडेट है जो कि वो स्पॉट को फिल कर सकते हैं. शान मसूद एक टिपिकल ओपनर है. उनकी एक और प्रॉब्लम मुझे किसी साहब ने बोली थी, बड़ी जबरदस्त बात. पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि शान मसूद का एक प्रॉब्लम यह है कि वो ट्रेंडी क्रिकेटर, जो ट्रेंड चल रहा होगा वो उसको फॉलो करेंगे और वो उसी की तरह खेलने की कोशिश करेंगे. इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट द प्रॉब्लम इज कि शान का जो एक गेम था हमेशा से, विच वाज हिज फॉर्टे, जिसमें वो एक सॉलिड प्लेयर थे, आप उन पर रिलाई कर सकते थे, वो एक लंबी इनिंग्स खेलते थे. तो उन्होंने उस अग्रेसिव क्रिकेट के माइंडसेट को मतलब अप्रोच करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को, या एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए, उन्होंने एक बहुत ही अग्रेसिव माइंडसेट से वो खेल रहे हैं. तो उसमें वो फेल भी हो रहे हैं. तो जब वो फेल हो रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हो रही है. तो उनका ये डायलेमा है. अगर आप उनको इस लिस्ट में से बाहर निकाल देते हैं तो फिर आपके पास सऊद शकील, आई बिलीव, इज प्रॉब्ली द बेस्ट कैंडिडेट टू बैट एट नंबर 3. सलमान अली आगा हैं, उन्होंने डोमेस्टिक में कभी भी नंबर 3 पे बैटिंग नहीं की है पिछले 2 सालों में. उन्होंने नंबर 4 पे जरूर बैटिंग की है. वहां पे उनकी एवरेज जो है वो 41 के लगभग है, 2 सेंचुरीज हैं, कुछ हाफ सेंचुरीज हैं. सऊद शकील की एक और इंटरेस्टिंग बात है कि वो 2021 में पाकिस्तान शाहीन्स के साथ गए थे श्रीलंका, और वहां पे उन्होंने ओपनिंग की थी, और उन्होंने ओपनिंग करके एक सेंचुरी बनाई थी. इसमें वो नॉट आउट रहे थे, लेकिन वो मैचेस थे पली किले में. तो ऑब्वियसली पली किले इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट वेन्यू कंपेयर्ड टू गॉल, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा. लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ सिर्फ नंबर्स बात करें तो आई थिंक सऊद शकील इज प्रोबेबली द मोस्ट जिसको आप बोल सकते हैं कि डिपेंडेबल कैंडिडेट टू बैट एट नंबर 3. अब ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप उनको मिडिल ऑर्डर से बाहर निकालते हो तो मिडिल ऑर्डर में आप उनकी जगह पे किनको लेकर आते हो.
क्या मोहम्मद रिजवान की जगह बनती है कि नहीं बनती? फिर एक ये सवाल उसके साथ ही खड़ा हो जाएगा। तो ये मेरा थोड़ा सा एनालिसिस था। आगे आप मुझे बताओ, आप किसको देखना चाहते हो? So, like, we have a couple of options. I wouldn't say that they're traditionally number 3 batters at the moment. I think they're pretty much openers as well. लेकिन शान मसूद भी तो ओपनर थे, लेकिन उनको हमने ट्राई किया नंबर 3 पे, लाइक यू मेंशन। तो मोहम्मद हुरैरा जो कि फर्स्ट टाइमर है, ट्रिपल सेंचुरियन है इस वक्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, जावेद मियादाद के बाद ही इज ओनली द सेकंड बैटर टू डू दैट, or average of 68 plus he has. So although I understand lack of experience, first tour and everything, but and he's also traditionally an opener, right? Second जो option है आपके पास, वो आपके पास हो सकती है अब्दुल्ला शफीक की, if you want to try हुरैरा और शान मसूद as an opener. Like फिर वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, do you really want to break up Abdullah Shafiq and Imam Ulag's batting partnership right there? Yeah, that's an issue. That's an issue because हुरैरा का अगेन आपने भी बात की तो मैंने उनके नंबर निकाले तो उन्होंने कभी नंबर 3 पे बैटिंग नहीं की है। So, हमारे यहाँ ट्रेडिशनली होता यही है कि अगर एक बंदा नई बॉल को खेलता आ रहा है तो आप उसको डाल देते हो कि यार चलो कोई बात नहीं, नई बॉल तो मिल ही रही है ना। बट फर्स्ट क्लास क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस काफी मैटर करती हैं। अब्दुल्ला शफीक कुड बी एन इंटरेस्टिंग चॉइस हियर, बट डू यू रियली वांट टू ब्रेक दिस पार्टनरशिप? That will be $1 million question. Absolutely. So I think agar aap dekhen, so obvious choice that you have right now is Shan Masood. But if you want to be a little bit experimental, you can go with South Shaki, like you mentioned, or maybe try Mohammad Hurera in the first test. Yeah, definitely. See where we end up. But ye question mark rahega. I feel like this will stay even after this series. This question mark will stay with Pakistan. Babar Azam, at no condition I want him to bat up the order. I think wo unki ek position set hai. He has exceptional numbers at that position. So why would you want to change that? And like you said, एक वो void रह जाएगा आपके middle order में बहुत बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप एकदम से अजहर अली नहीं है, आपने असद शफीक को और मोहम्मद से असद शफीक नहीं खेल रहे, फवाद आलम को आपने ड्रॉप कर दिया है, तो मिडिल ऑर्डर आपका एकदम से एक बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्लेयर्स अच्छे नहीं है, बट मतलब at this level you need some stability at number 4 to go with, forward. So I think बाबर को तो बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए। So I'll be very surprised अगर हम इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। थोड़े बहुत तो कर सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा I don't think so. We're team Pakistan, we don't really experiment, so वो एक expectation आप रख सकते हैं that we'll probably go the traditional way, but you never know, there could be a few surprises. So talking about surprises, let's talk about the spin resources of Pakistan. Like, no surprises there. I'm not surprised by the names Mohammad Nawaz, Numan Ali, Abrar Ahmed. It's been a while, but we haven't really seen any solid resources coming through in the spin department. It's been a long time since we have had the bowlers with the likes of Yasir Shah and Saeed Ajmal. Considering wo sari games UAE mein hoti thi, they used to dominate that venue and all that, but still, like, other than Abrar Ahmed, who have come up the ranks? What's the future of Pakistan spin department? ओके हिजाब, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट किया था एज अ स्टैटिस्टिशियन, डेटा स्पेशलिस्ट, इट वाज वे बैक इन 2020 इन द कायद आज़म ट्रॉफी। सो कायद आज़म ट्रॉफी में मेरा वो पहला प्रोजेक्ट था। तो व्हेन आई वाज वर्किंग देयर, सो मुझे अगेन एज अ जर्नलिस्ट हमें बताया जाता है कि जी बड़ा टैलेंट है हमारे पास, बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं हमारे पास। एक जाहिद साहब थे, मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा, जाहिद महमूद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग। Yeah. Zahid Mahmood was very highly rated. Yeah, तो उस कायद आज़म ट्रॉफी के सीजन में यासिर शाह ने सिर्फ 2 मैचेस खेले। He was playing for Balochistan and he only played 2 matches. But in those 2 matches he was, head and shoulders above the rest. Like कोई मुकाबला ही नहीं था किसी का उनसे उस वक्त। अच्छा, उसी सीजन में अबरार का डेब्यू हुआ था मेरे सामने, बिकॉज अबरार उस वक्त सेकंड 11 में कोई 5 मैचेस में कोई 50-55 विकेट लेकर आ गए थे। मतलब इतनी विकेट्स ली थी इन्होंने कि मतलब इतना श्योर था कि अबरार आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जब अबरार फर्स्ट क्लास में आए तो अबरार वाज वेरी 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 एवरेज। अच्छा, उस सीजन में साजिद खान ने अच्छा किया, नुमान अली ने अच्छा किया, नवाज हैज बीन देयर एंड देयर अबाउट। बट द प्रॉब्लम है कि आपको अगर कोई भी ये बोलेगा कि पाकिस्तान में स्पिन का बहुत टैलेंट है तो वो एब्सोल्युटली झूठ बोल रहा होगा। फर्स्ट क्लास में बहुत कम टैलेंट है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसकी वजह से एक और इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि आपकी जो डोमेस्टिक की पिचेस होती हैं उस पर बहुत लोग बात करते हैं कि अच्छी हैं बुरी हैं। प्रॉब्लम सारा ये है कि आप इनकरेज नहीं करते। जैसे जिस सीजन की मैं बात कर रहा हूँ वो 2020 का सीजन था, तो पूरा सीजन कराची में हुआ था क्योंकि कोविड था तो सब यहीं पर ही थे। लेकिन उसके बाद वाला सीजन जो था उस वक्त वो उसको बढ़ाया गया, यहाँ से मुल्तान लेके गए, लाहौर लेके गए,
फिर वापस आया, पिछला सीजन भी इसी तरीके से हुआ। तो पिछले 2 सीजन्स में स्कोर्स बहुत बढ़ रहे हैं, मतलब 550, 650 रन। आपने बात की हुरैरा की, तो हुरैरा के 300 रन इसीलिए बने हैं बिकॉज मैच में 550 रन पड़ गए। भाई अगर एक इनिंग में 600 रन बना ली किसी टीम ने, तो उसमें से 300 रन हुरैरा के होंगे। अब उन मैचेस में स्पिनर्स को रच के पिटाई पड़ती है और फिर वो लोग बहुत मतलब डिमोरलाइज हो जाते हैं, उन लोगों की बिल्कुल वो वाली हालत नहीं रहती। So right now, I don't think Naman Ali should have been there because Naman Ali की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है ये जिसकी बेस पर वो टीम में आते हैं। लेकिन नवाज, yes, and Abrar is the probably the most viable candidate that we have right now because उनके अलावा पीछे कुछ खास है नहीं। आप ये मत समझे कि पीछे पर बहुत बड़ी लॉट है, यही है, यही बच्चे। That's the dilemma. We don't have a pool anymore to choose from. या तो आपके पास बहुत बड़ा पूल पीछे डोमेस्टिक में पड़ा हो और उसमें से आप नॉन परफॉर्मर्स उठा रहे हो, so that's a different scenario, that's a different problem. लेकिन जब आपके पास pool of players ही नहीं है और फिर उसमें से you're choosing the likes of Naman Ali who hasn't really done well in international cricket, I would say, up until this point, with exception to 1 or 2 innings maybe. So that's this is like right alongside the number 3. This is definitely a bigger question mark right now, the spin department. और आप ये भी देखो कि PSL में अगर आप देखोगे तो अगर PSL में अगर आप ऐसे ही सिर्फ बैठ के सोचो तो कौन सा ऐसा स्पिनर है पाकिस्तान से who is actually doing wonders? It's actually Hijaab Zahid, who is already a Pakistan international. It's actually Mohammad Nawaz, who's also a Pakistan international. Then who else? You think about it and you don't have any. So that's an issue that Pakistan में spinners की बहुत कमी हो गई है एकदम से। हालांकि we have been termed ऐसे हम के साउथ एशिया से हैं, तो साउथ एशिया के अंदर भी हम लोग एक बहुत ही अलग सा एक केस स्टडी है क्योंकि हमारी पिचेस वैसी नहीं है जैसे श्रीलंका में है या इंडिया में है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे अभी जहाँ पे मैच होने लगे हैं वहां पे पिछले 2 सालों में 83% विकेट्स स्पिनर्स ने ली हैं गॉल में। मतलब दैट इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। सो आप मतलब उसको आप कैसे टैकल करोगे विद सलमान अली आगा या अबरार सिर्फ या नवाज? that'll be tough to handle for us. कैप्टन के लिए भी टफ होगा। He has to manage within the resources he has and it's going to be difficult. और हमने देखा है ये अभी recently भी टेस्ट क्रिकेट में कि unless you are a team who can take 20 wickets, it's going to be very very hard for you to win a test match. Extremely hard. And Pakistan has struggled in the last couple of years. पाकिस्तान के साथ बहुत ही रहा। Yeah, we struggle to take those 20 wickets. But जब हम अब चले स्पिन की बात हो रही है तो ये भी बात कर लेते हैं कि how well does Pakistan fare against spin? हमने ये थोड़ा सा एक इशू है पाकिस्तानी बैटर्स का। Okay, so this is a misconception. इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बैठ के मैं नंबर निकाला था बिकॉज एक कॉमन परसेप्शन ये है कि हम लोग जो है वो स्पिनर्स के अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं खेलते। अच्छा, उसकी वजह मुझे लगता है कि ये है कि जब भी कोई नया स्पिनर आता है तो जैसे हम लोग सब जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो मजाक उड़ाते हैं कि यार पाकिस्तान को जो है ना वो नया स्पिनर दे दो और हमने जो है ना उसको सुपरस्टार बना देना। एक्चुअली पाकिस्तान को आप कोई भी नया प्लेयर दे दो, पाकिस्तान को नया बैटर दे दो, जो बंदा अपना डेब्यू कर रहा होगा ना, इफ ही और शी इज डूइंग देयर डेब्यू अगेंस्ट पाकिस्तान, मैं कहती हूँ वो बंदा स्टार बन के निकले। बस यही कमाल है हमारा। अच्छा, ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, ये साउथ अफ्रीकन भी कहते हैं, जो इंडियन है वो भी सब यही कहते हैं कि भाई तुम लोग को नया बच्चा दे देते हैं, तुम लोगों ने उसका करियर बना देना, तुम फिक्र नहीं करो। अच्छा, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप पिछले 5 सालों में देखो तो पाकिस्तान हैव द बेस्ट एवरेज आउट ऑफ ऑल द टीम्स अगेंस्ट स्पिन and they also have the best average against all the teams against left arm spin. So left arm spinners के against मेरी जो अपनी याददाश्त वो भी ये कहती थी कि हम बहुत फंसते हैं। आप हमेशा से ये बात सुनते हैं, ट्रेडिशनली पाकिस्तान suffers against left arm spin. Absolutely, yes. But currently अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान की average against left arm spin is 40, above 40. Now that is better than India in the last 5 years की मैं बात कर रहा हूँ। So अगर हमारी बेस्ट है तो फिर बेस्ट है, क्या कर सकते हैं उसमें? I don't think that's नंबर से ही बताते हैं, नंबर से ही बताते हैं। It's a problem कि हम if we can play it well, but who do you see as the frontline warriors? अगर मैं बात करूँ, who are those batters that you identify might be the best against tackling spin, especially इस venue के ऊपर? We're talking about Gaul here. सो गॉल में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उनके जो प्रभात जसूरिया है, जिन्होंने पिछले साल वहां पे अपना आई थिंक डेब्यू किया था, जब मैं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज कवर कर रहा था तो वहां पर वो आए थे और उन्होंने सबको बहुत इंप्रेस कर दिया था विद स्पिन। उनकी स्पिन को टैकल करने के लिए आई थिंक 2 players who are very important is Imam ul Haq because he's a left hander and Saud Shakil again he's a left hander.
सो हालांकि पिछले साल बाबर आजम ने उनको बहुत अच्छा खेला था, अब्दुल्ला शफीक ने उनको एक इनिंग्स में बहुत ही अच्छा खेला था, जो चौथी इनिंग्स में उन्होंने 164 बनाए थे नॉट आउट। या सो दैट वाज एन एक्सेप्शनल इनिंग, यू नो, अगर आप उसको किसी भी पैरामीटर पे रख लो। लेकिन उसके बावजूद आई थिंक कहीं ना कहीं एक वल्नरेबिलिटी रहेगी, बिकॉज श्रीलंका यही चाहेगा कि पहले मैच को जीते, क्योंकि इनका रिकॉर्ड जो है वो कोलंबो में उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा गॉल में। गॉल इज देयर फोर्ट्रेस, so they would want to win it there and then take a 1-0 lead in Colombo and see कि हम कितना अच्छा है कितना बुरा खेल सकते हैं। But for now वो लोग यही कोशिश करेंगे कि जो गॉल है, गॉल को वो लोग पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करें। So again, and I also think Salman Ali Agha could be a very very handy cricketer because he is someone who scores at a very quick rate. और जब हम सलमान अली आगा की बात करते हैं तो पिछले साल तक रिजवान थे हमारी टीम में, अब सरफराज होंगे मोस्ट लाइकली। तो अगर सरफराज होते हैं, so I think that will also give us advantage because he is brilliant against spin and he plays that sweep as good as anyone in the world of cricket. So आप वो भी देख सकते हैं। I think ये 3-4 लड़के हैं। बाबर को मैं थोड़ा सा बाहर रखूंगा बिकॉज बाबर का काम कुछ अलग है। अगर बाबर को थोड़ा सा आप साइड पे रख सकते हैं, लेकिन आई थिंक सऊद शकील, इमाम, सलमान अली आगा बिकॉज वो नीचे आते हैं, और फिर सरफराज बिकॉज ये चारों जो है दे कैन एक्चुअली डू वेल अगेंस्ट स्पिन। ये मैंने वैसे पहली दफा किसी के मुंह से सुना है कि हम बाबर को थोड़ा सा साइड पे रख लेते हैं, बिकॉज व्हेनेवर यू आस्क समबडी दिस क्वेश्चन सबसे पहला नाम जो आता है ना वो आता है बाबर आजम का। क्यों? क्योंकि बाबर आजम इज लाइक पैनाडोल, वो हर मर्ज की दवा है। हाँ, बस वो ये ना कि मतलब मसला ये कि बाबर आजम अब इतने ज्यादा बाबर हो गए हैं कि अब उनको थोड़ा सा हमें थोड़ा सा सुकून देना चाहिए। वो बेचारे एक इनिंग में फेल होता है तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। उनकी जो पोजीशन है और उनका जो रोल है, ही फुलफिल्स दैट टू द टी। तो ये कि ऑब्वियसली इट्स अ टीम गेम, he alone cannot be responsible for a win or cannot be responsible for a loss as well. So I actually agree with that. आपने अभी जिक्र किया the thing that you know, मेरे वो लाइट बल्ब जला यहाँ पे एकदम से, आपने जिक्र किया सरफराज अहमद का। So I am मुझे अब ये अंदाजा ये हो रहा है कि you want Sarfaraz to be in the playing 11, considering the venue, the spin. So who do you think should keep? Like it's a question. Like everybody is asking. Is it going to be Rizwan? Is it going to be Sarfaraz? Who is it going to be? Okay, first of all, let me clear कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि सरफराज खेले। मेरा वो रिश्तेदार नहीं है। मैं कराची से हूँ, तो कराची वाले वैसे ही बदनाम है कि पता नहीं हम लोग जो है वो सरफराज की लॉबी करते हैं। तो ये I think he should have retired 3 साल पहले। लेकिन खैर he made a very good comeback last year, so you know, credit to him because he did what many thought he could not, to be very honest, and to be very fair. So I think सरफराज की जो परफॉर्मेंस रही है पिछली सीरीज में, आई थिंक ही शुड स्टार्ट एज द नंबर 1 कीपर, एंड आल्सो कंसीडरिंग कि श्रीलंका में स्पिन का मतलब जोर ज्यादा है, स्पिन ज्यादा कामयाब है, खासतौर पे गॉल में। अगेन आई थिंक वहां पर भी सरफराज की जरूरत ही पड़ेगी। आई थिंक कीपिंग में रिजवान का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सारी है कि अगर आप कीपिंग, अब क्योंकि सिर्फ कीपर्स खेलते नहीं है, अब यू हैव टू बी अ कीपर बैट्समैन। तो अगर आपकी कीपिंग बहुत अच्छी भी है, लेकिन अगर आपकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है जो कि 7वें नंबर पर आके 6वें नंबर पर आकर हमें 40-50 रन बना के दे सकती है, तो फिर you're probably not as good as you know people think you are, and that's an issue. So I think Sarfaraz will start. I'll be very surprised अगर वो स्टार्ट नहीं करते, because मतलब हमारी हिस्ट्री यही रही है। और अभी क्योंकि नया कोचिंग स्टाफ भी आया है, they are a fan of Sarfaraz as well. मिकी आर्थर आए हैं, you know, and he's in the mix. So I'll be very, you know, I'm very sure that he will play. I think Sarfaraz will play. Yeah. At least in the first test. जहाँ पे हमें at least in the first test. हाँ, बिल्कुल। Because रिजवान की परफॉर्मेंसेस भी ऐसी नहीं रही हैं कि अगर आप मतलब सरफराज खेले तो कोई मीडिया का बहुत ज्यादा प्रेशर हो। ये भी एक वजह है कि हमारे यहाँ बहुत सारे डिसीजंस होते हैं वो आप मतलब वो चेंज हो जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकॉज ऑफ मीडिया प्रेशर, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। Just because they're not popular decisions. Yeah. Yes, absolutely. So वो होते हैं, लेकिन I don't think सरफराज का right now इस तरह का कोई डिसीजन है टेस्ट क्रिकेट में लेकर रिजवान को लेकर कि जी रिजवान जो है वो आप उनको हटा सकते हो प्लेइंग 11 से। I think that is pretty much doable. And Rizwan is also a very likable character. You know, he is someone who actually, you know, he gets happy for other people and in their success. So उसका भी ऐसा नहीं है कि वो जी अगर बाहर बैठा हुआ है तो वो कोई फजूल सा इंटरव्यू दे देगा कि मुझे बाहर क्यों बैठाया। You can expect that Rizwan is not a fussy guy. He's not going to create fuss on the fact that he's on the bench. I guess
he understands logic and behind the selection and behind the playing 11 Yeah, obviously. So chances yahi hai ki we'll see Sarfraz playing in the first test. absolutely. Yeah. Absolutely. Okay. Yeah. So अब हमने बात कर ली प्रॉब्लम्स की. लेट्स टॉक अबाउट द बिग पॉजिटिव. सबसे बड़ा पॉजिटिव इस सीरीज का है Shaheen's return in whites. Obviously, we have missed him dearly. Last year, Sri Lanka, he got injured and he had to miss the whole home season. Yeah. He never fully recovered from there, but this time he's back in the same ground, at the same ground, same venue. He's back in whites, and he is eyeing his 100th Test wicket. Yeah. So, how are you seeing his return? Do you think he's ready to go? Are we going to see the same Shaheen? Do you think there has been any change in him after the injury? What do you think about that? I think उसका जो अभी जो काउंटी का सीजन है, I think that will really help him because I think जो इससे पहले का जो टाइम था PSL में, he looked very rusty at the beginning, but as the tournament went on, he was really good. Yeah. I think he will. I think इसका जो NatWest T20 का जो उसका पूरा stint था, I think that will really help him because एक तो मतलब he looked really sharp there. जितने मैंने उसकी footage देखी है, obviously TV पर ही देखी है, तो जितनी भी देखी है, तो he looked really sharp. और मतलब उसने जो है वो जो उसकी जो मतलब वो जो ट्रेडिशनल इन स्विंग है at the very start, वो उसकी दिखाई दी है. So I think that is a very good sign for Pakistan, especially coming, World Cup आ रहा है. तो I think ये भी है और अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इसको किस तरह से यूज करते हैं. Okay. Because World Cup को लेकर मुझे I'll be very surprised अगर हमारी सेम बॉलिंग लाइनअप खेलती है दोनों मैचेस में. So अगर टीम मैनेजमेंट में हूँ तो I will probably rotate, Shaheen, Naseem and Hassan in a way कि शायद तीनों बॉलर्स को एक टेस्ट मैच मिल जाए या किसी को दो मिल जाए, बाकी दो को एक मिल जाए, और तीसरा जो है वो आमिर जमाल को मैं पुश करूं because he's someone who's hungry, he's someone who looked really good. Even in the जो अभी वार्म अप मैच हुआ था उसमें भी बहुत अच्छे लगे ये, जितनी मैंने फुटेज देखी, तो he looks good. और वो उनका अच्छा खासा पेस भी अब एकदम से he looks really sharp as well. So ऐसा भी नहीं है कि अगर शाहीन नहीं होते या नसीम नहीं होते तो आपके पास कोई 140 वाला बॉलर नहीं है. I think he can bowl 140, 145 and consistently. So I think we now have that luxury जहां पर हम आमिर जमाल को पुश कर सकते हैं, which will obviously help Pakistan. But शाहीन को लेकर थोड़ा सा मतलब एहतियात करनी चाहिए, considering कि जो वर्ल्ड कप में हुआ था, वर्ल्ड T20 फाइनल में हुआ था, वो याद है और वो काफी ताजा है. हाँ, वो PTSD तो है हमें शाहीन को लेके. एनी टाइम ही डाइव्स, एनी टाइम ही इज इन इन द फील्ड, एनी टाइम ही फॉल्स डाउन, आपको एक झटका लगता है एज अ पाकिस्तानी फैन, या अल्लाह खैर, जस्ट वांट शाहीन, वी जस्ट वांट शाहीन टू बी. तो वो डेफिनेटली एक जो है वो फैक्टर है उसके अंदर. वी वांट प्रोटेक्ट आवर key pacer before the World Cup as well. So definitely. Yeah. So यहीं से एक और point निकलता है कि do you see Pakistan going with 2 pacers or 3 pacers? Like you said, you want them to rotate their resources, obviously. So like first test की अगर आप बात करो, it's a spin heavy venue. Do you see Pakistan going with just 2 pacers in the first test, or do you think we'll go with 3? अच्छा, पाकिस्तान की ट्रेडिशनली कोई बहुत अच्छी हिस्ट्री नहीं रही है whenever we went in with 2 pacers. Yeah. That's an issue that we have faced for a very long time. I think that was why we persisted with Razak for so long, even before that Azhar Mahmood for so long, because we always wanted someone who can bowl as well, pace चाहिए हमें. Yeah. वो हमारे pace के साथ एक अलग रोमांस चल रहा है, वो रोमांस नहीं खत्म हो सकता, वो चाहे मतलब कुछ भी खत्म हो जाए. So वो रोमांस चलता रहेगा, I think. But मुझे लगता नहीं है कि हम 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे. Okay. So I think पाकिस्तान की जो टीम होगी वो कुछ इस तरह की होगी कि नीचे से आमिर जमाल थर्ड पेसर होंगे हमारे, मोस्ट लाइकली शाहीन एंड नसीम एंड आमिर जमाल, एंड देन देयर बी अबरार, और फिर आपके पास एक और स्पिनर टॉप 7 में हमारे पास होगा. Which is why I don't think that not having Shan Masood in the playing 11 will be a big surprise, because अगर आप सऊद शकील को नंबर 3 पर डाल देते हो, बाबर 4 पे आ जाता है, सलमान अली आगा 5 पे आ जाते हैं, सरफराज 6 पे आ जाता है, तो नवाज could be that third option at number 7. And then you have Amir Jamal at number 8 as well. So I would not be entirely surprised अगर हम 6 bowlers के साथ ना जाएं और 6 में से 3 spinners हमारे पास हों, because Nawaz and Abrar are pretty good pair, I think. Salman Ali Agha is obviously a bonus, but I think वो दोनों अच्छे खासे bowler हैं. So again, by looking at the record, तो कोई बात नहीं. You're not counting Numan Ali anywhere.
I don't think he should be in the squad. That's as simple as it is. He has done nothing for Pakistan team internationally. जिसकी base पर उनको इस team में होना चाहिए. Why do you think he's there? That's a very interesting one because पहले तो ये था कि पहले मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर थे तो हर कोई ये बोलता था कि जी वो उन्हीं के नॉर्दर्न से खेलते हैं तो वैसे आ गए. But that fact has been eliminated now. Yeah, which is why it is even more surprising that he is still there. मतलब वो कुछ भी हो जाए ना तो maybe he's a very likable character, I don't know, but अगर मतलब आप एक बिल्कुल न्यूट्रलिटी से सोचो तो you would rather have someone who's young who can actually develop into something rather than having someone like Noman Ali. Like for instance, we haven't given any chance to Zafar Gohar. I don't know why. I don't know उस बेचारे ने क्या गुनाह कर दिया हुआ है कि उसको नहीं देना हमने chance. Just like we did not give any chance to Fawad for so long. Just like we are not giving any chance to Usman Salahuddin for so long. That's what we do all the time, and that's what we are still doing with other people. So ये एक problem है और ये चलती रहेगी. So कुछ किया नहीं जा सकता, unfortunately. Well, I hope कि इसका कुछ किया जा सकता हो. In the future, we do see some fresh faces, and even faces जो कि they've been long ignored, like the names you mentioned yourself. I mean, अगर आप मतलब I have watched Usman Salahuddin play, and I think I hope that I'm calling his name right because वो उस्मान समीउद्दीन और सलाहुद्दीन के बीच में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं कहीं ना वो क्रिक इन्फो वालों का तो नाम नहीं ले रहा हूँ. बट एनीवेज, सो ही इज सो गुड. लाइक मैं उनको जब देखता हूँ वो हमारे टॉप 3 रन गेटर्स में होते हैं हर सीजन में बेचारे, और वो कभी सिलेक्ट नहीं हो रहे. अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कर दिया है ऐसा. Like he's not even on the radar, you're saying. That's an issue. Like he is always there in top 3. अगर मोहम्मद हुरैरा select हो सकता है तो उस्मान सलाहुद्दीन भी select हो सकता है. He's also a top order player. Right. So I have no idea why is there this sort of undeclared ban on some people जिसकी वजह से बस वो आ नहीं सकते for some odd reason. और 5 साल के बाद जब he will be 36 तो उनको आप एक chance देंगे and then he will fail and then his career will be over like we did with Fawad. मतलब 8-10 साल 12 साल जाया करके तो वो कर. Anyways, coming back to the series, yeah. So, well, obviously, since Noman Ali is there, we want कि अगर वो खेलते हैं, we want him to do well, obviously, क्योंकि हम जीतना चाहते हैं. We want to win. It's a fresh start. मेरा उनसे पर्सनल कुछ नहीं है. अगर वो सुन ले तो मेरा उनसे बिल्कुल पर्सनल कुछ नहीं. Obviously, a person हो भी नहीं सकता because it's about the team. It's not about us anymore. So absolutely. We want, since he's there now, we want him to do well for however long he's there. He probably won't have many more years to come जिसमें वो खेलेंगे for Pakistan. But जब तक वो है, we want him to do well, and this is a fresh start to our World Test Championship cycle. We want to start with it. Absolutely. So talking about that, नया start है हमारा about the this is the first series World Test Championship की. Would be great if we can win the whole series. So what's your prediction? What's going to happen? यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की आपने बात की ना. लास्ट टाइम अभी मतलब मैंने कुछ देखा था, हमने पिछले 2 सालों में हमने 8 टेस्ट मैचेस घर पे खेले and we could not win a single one of them. Why do you have to remind me of that? नहीं मतलब मैं सिर्फ रिमाइंड इसलिए करा रहा था because I think last time Pakistan had a very good chance of playing in that final. जहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेले वहाँ पे it could have been maybe Pakistan India, maybe Pakistan Australia. I think a dream final to have it. So I think वो हो सकता था, लेकिन हमारी कुछ अजीब सी अगेन पॉलिसीज थी जिसके बारे में कुछ समझ नहीं आता. सो बाय द लुक ऑफ इट आई थिंक पाकिस्तान की टीम इज एज गुड एज इट कुड हैव बीन. मतलब सब है वहां पर, कोई वजह नहीं है कि हमें सीरीज नहीं जीतनी चाहिए. लेकिन श्रीलंका का रिकॉर्ड रिसेंटली काफी मुनासिब रहा है घर पे. हाँ, पिछले 2 सालों में दे आर द 3rd बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड in terms of playing at home. I mean, they almost did the World Test Championship final. They almost did. Absolutely, yeah. And they did. So this is an interesting point. So we almost did. I mean, we could have done it because of our away form, and they could have done it because of their home form. This is how it is. So Pakistan was the best away from home in last 2 years, and Sri Lanka were the 3rd best while playing it. So इसलिए सीरीज काफी मुनासिब होगी. And I think it will be 1-1 again. I think it will be. मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती क्यों है. ये 1-1 क्या फायदा? मतलब what's the point of having it? And it doesn't feel the same way when it's drawn. When the series is drawn, it just doesn't feel the same way. Exactly, जैसा last year हुआ था हमारे साथ. So are you predicting we losing the first test and winning the second? What's the order? Yeah. I think we will do well in Colombo. I think we will do much better in Colombo. I think Colombo suits our brand of cricket much more.
वहां पे पेसर्स की ज्यादा चलती है कंपैरेटिवली टू स्पिनर्स, सो वहां पर हमें वो फायदा होगा। और थोड़ा सा वेदर भी चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ग्राउंड जो है वो भी चेंज है, क्योंकि जो कोलंबो का जो ग्राउंड है दैट इज कवर्ड, मतलब एंटायरली, वो सिर्फ बीच से खुला हुआ है। जो नॉर्मल ग्राउंड होते हैं जिस तरह कराची का है कि जी वो चारों तरफ से बंद है, लाहौर का है चारों तरफ से बंद है, अच्छा गॉल में जो है वो मतलब हर तरफ से खुला हुआ है। तो उधर की जो विंड का जो इम्पैक्ट है वो आपको बाकायदा दिखता है जब मैच हो रहा होता है, बिकॉज एट टाइम्स इट्स सो विंडी के you can't do anything properly. Right next to the ocean, right? Absolutely, yeah. So at times it's very humid, so वो एक बिल्कुल अलग मतलब atmosphere हो जाता है. So Colombo comparatively it's much, you know, थोड़ा simple है for other teams, visiting teams. They tend to do much better in Colombo than they do in Galle. And which is why, I mean, this is their fortress, and I think Sri Lanka will do well in Galle. In the first test. Unless Abdullah Shafiq scores 164 again in the fourth. Okay, and we all. I mean, that is an anomaly, right? Yeah, that is an anomaly. I don't want that to be an anomaly. I want that to be the normal thing to do. Like Abdullah just coming in and saving us again in the fourth innings. Allah करे तब तक उस चीज की नौबत ना आए. But if it does, who doesn't want to see Abdullah Shafiq bat? Oh, so he's very easy on the eyes. So thank you so much, Azeem, for your presence today, for all your input. Love that you didn't hold back. So yeah, I mean you can always expect that from me. I hope this was a good experience for you, your debut on GRC, and we will probably be poking you over and over again for your inputs throughout this series. So thank you so much, Azeem. Thank you once again. Thank you so much. Thank you so much, Hijaab. Thank you so much.